Hello students, how are you? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 6, which is highest common factor and lowest common multiple. So we already know about the factors and multiples in our previous chapter. So in this chapter we are only focusing on the highest common, मतलब कि फैक्टर्स में भी हाईएस्ट कॉमन कौन है एंड मल्टीपल्स में लोएस्ट कॉमन कौन है. तो वी हैव सम मेथड्स टू आइडेंटिफाई टू कैलकुलेट दिस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर. सो द बेसिक आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें समझी हुई हैं. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द मेथड्स के विद वो मेथड वी आर गोइंग टू find out the HCF. So the first method we have prime factorization method, and the next method we have long division method. In prime factorization method means prime numbers are there, right? And we are also talking about in a previous class about the prime numbers. Those are only having the common factor 1 and itself only. So what we have to do, we have to simplify this 36 with the help of the prime numbers only. That is called prime factorization. Okay, so how can we simplify it? 2 multiplied by 18, 18 will be 3 multiplied by 6. 6 को भी further simplify करेंगे to get it into the prime factor numbers only. So 6 will be 2 multiplied by 3. So 2, 3 and 6 are prime factors of 36, and 2, 3 and 6 is called the prime factorization of 36. Now we have 160. So how we have to solve it? 160, 8 times आएगा 16, 8, 0, 280 is 42. आप देखते चलो बच्चे, 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4, 2, 1. So 5 के लिए when for 5 we have to take the table of 5. So we have these prime numbers. So it means 2 multiplied by 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 2 multiplied by 5 is equal to 160. These are the prime factorization of 160. Okay. Now prime factorization method. So we have two numbers 24 and 36. So first we have to simplify it with the help of a prime factorization method. For 24 we have these numbers, and for 36 we have these number. Now we have to write this all these numbers together. So 2 triple times 2 multiplied by 3, double time 2 double times 3. So 1, 2 is common, 2 is common, 3 is common, 3 is common, then 2 again common, 2 again common, that's. So 2, 2 and 3, these three numbers are common among 24 and 36. Now among these three numbers, so what is the HCF of 24 and 36? The HCF is 12. Okay, next we have 36, 48, 72. We have to repeat the same process again. Prime factorization of 36, prime factorization of 48, prime factorization of 72. Write all the numbers together. First we check 2 is here, 2 is here, 2 is here, again 2 is here, 2 is here, 2 is here. Okay, 3, 3 and 3. So it means 2 times 2 and 1 times 3 is common among these three numbers. So 2 multiplied by 2, 4, 4 multiplied by 3 is 12. So this is your SCF of 36, 48 and 72. Now we are learn about the long division method. How do I have to find the SCF with the help of long division method? So in this case we have to find the SCF of 918 and 1224. So we have to divide it 1224 with the 918. So for we have 3-digit number, so we consider 3 numbers. तो 1224 में हमारा 918, तो अगर हम सेकंड पोजीशन पे लेंगे 918 2 लेंगे तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा. तो अब हम फर्स्ट लेंगे, तो हमें यहाँ से जो माइनस करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये आपका बन जाएगा डिविजर. माइनस करके जो आपका आंसर आएगा, व्हाट यू गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, दैट विल कन्वर्टेड इनटू अ डिवाइजर, and the number which is subtracted from the above number, it will become your dividend. Okay, so now you have to divide 918 by the 306. So 306 thrice, मतलब 306 को 3 times multiply करेंगे तो we get 918. So this is our answer. So what is the HCF of this? So the HCF of this last number, okay, 306. Here the last divisor is 306. Therefore HCF of 918 and 1224 is 306. So this is your long division method. Now what we have to do when we have three numbers, so you have to repeat the same process again. So for 1, the smallest number among this is 527. So you have to divide it from 527. First you divide this number. So 1020. So first we take 527.
ओके, नेक्स्ट माइनस करेंगे 5 टू, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 493। अगेन 493 क्या हो जाएगा, 493 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और जो हमने माइनस किया था 5 10 to 7 इट विल बी बिकम एज इन डिविडेंड। सो 427 को 493 से डिवाइड करेंगे तो 493 लेंगे, फिर 34 आएगा, 34 से 493 को करेंगे 153, फिर 102 लेंगे, देन 51, देन 31 एंड देन लास्ट हमारा आएगा 17। So what we take here के for SCF of 527 and 1020 is 17। अब हम चेक करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा नंबर है 11594, इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 682 टाइम्स पर ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी नो मैम कि हमें किस नंबर से कब मल्टीप्लाई करना है। फॉर दिस ना स्टूडेंट्स यू हैव टू एज्यूम a lot of numbers, try and error method आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, then you are able to find the exact number, the highest common factor for these numbers. So same process we have to repeat. Next, the largest common factor of two or more number is their common factor is SCF, highest common factor. The highest common factor is also known as, क्या बोलते हैं आप देखोगे और आप खुद बताओगे, पढ़ाया मैंने ऊपर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ, यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 इज द एचसीएफ ऑफ इट। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट विच नंबर्स आर सेम अमंग दीज two numbers and then you have to multiply those numbers together and their product is your HCF. Write the common factors for this. So for 15 you have 3 multiplied by 5 and for 25 you have 5 multiplied by 5 and we have two common factors. So common factor is only 5 for 15 and 25. Next, find the HCF using prime factorization method. So for 16 and 34, so first we solve it for 16. So 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Next we have 34, 2, 1, 7. Then we have to take 17, 1. So only 2 is common among these. So 2 is the the 2 is the prime. So prime factorization should be 2 multiplied by 2. यहाँ पर common होगा, बाकी सब तो common नहीं है, यहाँ पर ही कर देते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 17. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 7 8s are 5 7, एक मिनट, 102 आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट टिक द करेक्ट। द एचसीएफ ऑफ 12, 24 एंड 36 इज, आपको ये सॉल्व करना है, you have to find out the answer. Then for finding HCF of bigger numbers method is used. bigger number के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, long division method. Find HCF of 252 and 540, again numerical based question. Full form of GCD is great common fact divisor, greatest common divisor, greatest clean divisor given, तो यहाँ पे greatest common divisor आएगा. Then least common multiple LCM, the least common multiple, वहां पर हम बात किसकी कर रहे थे, we are talking about the factors, now we are talking about the multiples. The same process, the prime factorization method applied here, LCM by prime factorization method. So what you have to do, this is your 64, you have to check out what are the prime numbers for the 64, 48 and 40. Okay, then the maximum number of times. So what you have to do here, you have to see the numbers 1 2 3 4 5 6. Count the numbers of occurrence of these factors. The maximum number of times factor 2 occurs is 6. The maximum number times the factor occurs is 1 and the maximum number times of the factor occurs 5 is 1. So 2 2 2 6 3 5. तो आप सभी numbers को एक साथ multiply कर दोगे, you will get your LCM which is 960. Then LCM by long division method. तो same process we have to apply here. So यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या कर रहे थे कि पहले जो हमारा डिवाइजर था उसे डिविडेंड हमने, मतलब जो हमारा हर बार हमारा डिविडेंड चेंज हो रहा था और डिवाइजर भी चेंज हो रहा था हमारे एचसीएफ के केस में, पर एलसीएम के केस में ऐसा नहीं होगा। आपको 24, 30 एंड 36 को कंसीडर करना है, तो आप 24, 36 एंड 36 एक साथ ही लिखोगे, फिर हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, तो 2 के टेबल में 24 कब आएगा, 12 टाइम्स, 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स, 2 के टेबल में 36 18, एंड यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस टिल देन, जब तक आपका जो आपका सबसे बिलोएस्ट वो होगा
रो होगा वहां पर आपका 1 1 ना जाए, आपको सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6, देन 50, यहाँ पर 15, देन यहाँ पे 9, 3 से 2, 5 and 3, then we have to take 2 stable तो 1, then we have to take 5 stable 1 1, or then we have to take the 3 stable, so 1. So these are the numbers we have. So 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 2 and 5 multiplied by 3, answer is 3 multiplied by 360. Relation between HCF and LCM of two numbers. So there is a formula, LCM multiplied by SCF is equal to the first number and the second number. It means the product of those numbers. Okay, so the SCF for two numbers is 28 and their LCM is 336. Okay, if one number is 112, find the other number. So you have LCM and HCF, multiplied it together. To find out the next number, you have to divide it from the product of it. So 336 multiplied by 28 divided by 112, your answer will be 84. The product of the SCF and LCM of 15 and 25 is, so what you have to do, you have to multiply these number together. 25 multiplied by 15, 5 5s are 25, 2 5 2s are 10, 5 7 3. So your answer will be 375. So in same manner you have to solve the rest of the questions. Find the LCM of the following set of factors. So the LCM is 3 2s are 6, 3 5s are 15. So 15 multiplied by 6, 3 times 30 to 6 7. Mm-hmm, 90. Then 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 5 20, 20 multiplied by 2 3s are 6, 6 5s are 30, 1200. तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो यही सॉल्व कर लेते हैं. 2 के टेबल से 12, यहाँ पर 1 8, देन 2 6 9, देन 2 3 9, देन 3 3, यहाँ 1 आएगा, then 3 and then 1. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, और 24 3s are 4, 3 4s are 12, 1 3 2s are 6 7, 72 आएगा इनका आंसर. ठीक है, इसी तरीके से आपको बच्चों बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने. फाइंड द एलसीएम ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आप यहाँ पे सेम प्रोसेस यही आपको अप्लाई करनी है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करी थी. ठीक है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 54 respectively. If the number is 27, find the other number. So what you have to do, 9 multiplied by 54 divided it by 27, 1 3 1, 18 is your answer. Okay, now the LCM of two numbers is either greater than or equal to the number. Okay, SCF of the number is product of two numbers, LCM of two numbers. SCF of two number is product of two numbers और LCM, यहाँ पे LCM of two numbers नहीं होगा, ये होगा हमारा. ठीक है, और स्टूडेंट्स आप इसी के साथ योर चैप्टर इज एंड हियर. आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. यू लाइक दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जो डू वन थिंग, यू हैव टू रिपीट द होल कंटेंट वन मोर टाइम एंड आफ्टर दैट you don't have any kind of doubt. Okay, so for today's class, that's it. Now I will meet you in your next class. Till that, bye bye, have a good day.